now we will talk about the four major categories of restrictive lung diseases. Okay, so number one is fibrosing diseases. This is the main disease. Fibrosing means scaling occur. And number two, granulomatous diseases. Okay, and number three, eosinophilic diseases. And number four, smoking related diseases. Number three, eosinophilic, and number four, smoking related. These are the very short terms we will discuss next lecture, but these are the main topic for today lecture because they are the big topics: fibrosing disease and granulomatous disease, and very interesting topic. If you read the book, then you can't understand even one word you can't understand. So now we'll talk about the fibrosing diseases. So there are the following five types of fibrosing diseases. Number one is usual interstitial pneumonia. Number one, usual interstitial pneumonia. In case of usual interstitial pneumonia, we will perform further. This one we done spirometry first of all. If the patient is, if the value increases, then we consider that this is a patient of restrictive lung disease. After that, we will think that this patient is fibrosing disease, or either granulomatous disease, or either smoking related disease, or either eosinophilic disease. So for that purpose, we will do the histological investigation. Okay, on the histology means on the electron microscope, there will be the patchy fibrosis. Okay, what is a patchy? What is patchy? Girls know better than boys. What is patchy? जब कभी जब हाँ हाँ गुड गुड जब कहीं पे ना मतलब कि कपड़ों को दाग लग जाए कहीं पे तो वहां पर थोड़ा सा डिजाइन बना देती हैं लड़कियां मेरी सिस्टर भी मतलब कपड़े कपड़े खुद सीती है ना तो मैं भी उनके साथ शोर लगाता रहता हूँ जब कपड़े सिले होते हैं तो कभी उनसे कुछ दाग गलत चीज लग जाती है ना फिर वो उसको डिजाइन ही बना देते हैं तो दैट थिंग इज पैची ओके तो लड़के तो फुल बने लगा सकते हैं लड़के लगा लेते हैं उनका फिर भी इतना मतलब ये नहीं होता पता नहीं चलता उनका ना कि ये डिजाइन बना हुआ है या जबरदस्ती लगाया गया है इसका पैच तो पैच के पेरेंट्स on the histological diagram there is a patchy appearance but the exact cause of usual interstitial pneumonia is unknown. Now we'll talk about its pathogenesis, that how usual interstitial pneumonia occur. But the problem is that the exact cause is still unknown. Okay, so the exact cause is pathogenesis. Exact cause is unknown. Mean it is where medical students we use biological terms. जिसका cause मालूम नहीं होता उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर आयशा, डॉक्टर किन्जा, जिस डिजीज का किसी भी अननोन काज की वजह से कोई डिजीज अकर होती है तो उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में? इडियोपैथिक. Idiopathic. Okay, so this is the idiopathic pulmonary fibrosis. We also call it IPF. Idiopathic pulmonary fibrosis, because we are discussing about fibrosing disease. Okay, so pathogenesis, the exact cause is unknown. Exact cause is unknown, and we consider that there may be the genetic predisposition for the UIP, for the usual interstitial pneumonia. इसको
नाम दे रहा हूं, इंटरस्टिशियल का मैं क्यों नाम दे रहा हूं? देखें, ये एक एल्वेलाई है और ये एक एल्वेलाई है। इन दो एल्वेलाई के दरमियान स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियम। और इन स्पेस के दरमियान जब जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, उस कनेक्टिव टिश्यू को जब फाइब्रोसिस होगी, उसके लिए में क्या होगा? उसके लिए में स्कार बनेगा। और स्कार क्या बनेगा? जब स्कार बनेगा तो वो इसको क्या करेगा? अंदर की तरफ पिच करेगा। जब अंदर की तरफ पिच करेगा एल्वेलाई को, तो उसकी सरफेस जो है, उसकी जो वॉल्यूम है वो कम होगा। आप समझिए कि मैं इंटरस्टिशियल बार बार क्यों यूज कर रहा हूं लफ्ज। ओके, नाउ बिकॉज ये देखें, अब ये दो समझिए दो एल्वेलाई हैं, इनके दरमियान जो इंटरस्टिशियम है, ठीक है, अब यहां पे स्कार बनेगा। ठीक है, स्कार बनेगा। जब स्कार बनेगा तो ये एल्वेलाई पिच करेंगे अंदर की तरफ। जब पिच करेंगे तो उसके लिए में क्या होगा? उसके लिए में जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ द पैथोजेनेसिस। So there are the following three causes of usual interstitial pneumonia. Number one is loss of telomerase. Very interesting. Loss of telomerase. Dr. Aisha, what is telomerase? Dr. Kenza. टीलोमेर क्रोमोसोम, हम पढ़ते हैं ना कि जो क्रोमोसोम है उसका एक टीलोमेर होता है, उसको एंड पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? टीलोमेर बोलते हैं उसको। ठीक है, बहुत देर की मेहरबान आते हैं। चलिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ लेक्चर के लिए ना। So what is telomerase? Telomerase are the end point between the adjacent chromosome. Okay. So telomerase is an enzyme which control the length of the telomeres. When the length of the telomeres shorten, then there will be the mutations in the chromosome, in the genes. When there will be the mutations, then this is the telomere, these are the adjacent chromosomes. When there is a loss of telomerase enzyme, then the telomeres length decreases. When the telomere length decreases, then there will be the mutation in the genes. When there will be the mutation, then there will be the cellular senescence. What is cellular senescence? This is the apoptosis, mean the programmed death of the cell. ठीक है, apoptosis mean death of the cell. When there will be the death of the cell, then it will lead to the profibrotic phenotype. Okay, so it will lead to the profibrotic phenotype activity. Now you are confused, Dr. Keza, that what is profibrotic phenotype? Profibrotic phenotypes are those characteristics that increases the scaling, that increases the fibrosis. Okay, तो उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? प्रोफिब्रोटिक फिनोटाइप. So when there will be the loss of telomerase enzyme, then there will be the reduce in the telomeres, the length of the telomeres decreases, and in this case there will be the cellular senescence, mean the death of the cell. And when there is the death of the cell, then it will promote the profibrotic phenotype, mean increases the fibrosis. Okay, this is number one hypothesis. Now number two hypothesis is that MUC5B gene mutation. When the mutation in this gene occur, what is the function of this gene?
This gene produce mucin. This gene produce mucin. This gene produce mucin. What is the function of mucin? Mucin maintain the integrity of the lungs epithelial surface. Okay, this is the mucin throughout the lungs, to the trachea, to the bronchi, then bronchioles, then alveolar duct. This is the mucin. It maintains the integrity of the epithelial surface of the lungs. When there will be the when there will be the mutation in MUC5 gene, then there will be the no production of mucin. When there will be the no production of mucin, then because mucin is a primary barrier for any foreign antigen, for any foreign particle, mucin is a primary barrier. Okay, when there will be the no production of mucin, then any particle can cause fibrosis here. Then any foreign particle, any antigen, any dust, any smoke particle can cause fibrosis here. Okay, इस बात को क्लियर हो गया? MUC5 जीन क्या प्रोड्यूस करता है? म्यूसिन. जब इस जीन में म्यूटेशन होगी तो म्यूसिन क्या है? प्रोड्यूस नहीं होगा. जब म्यूसिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो इंटरनल म्यूकस लाइनिंग है जो इसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखती है लंग्स की, वो क्या होगी? वो डिसरेगुलेट होगी. जब डिसरेगुलेट होगी उसके लिए में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा वो क्या करेगा? इंजरी काज करेगा. और उस इंजरी के लिए में क्या होगा? मैक्रोफेज आएंगे, गैंगस्टर सेल्स, मैक्रोफेज. वो मैक्रोफेज आएंगे और मैक्रोफेज क्या करेंगे? सबको बुलाएंगे जनाब, सबको बुलाएंगे, मोनोसाइट्स को, टी लिम्फोसाइट्स को. इसके अलावा वो बुलाएंगे जनाब मजीद जो है ना, वो मजीद मैक्रोफेजेस को बुलाएंगे और इसके अलावा रिलीज करेंगे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8. और इसके लिए क्या होगा? ये पूरा गढ़ बन जाएगा. जब ये पूरा इतने सारे सेल्स का क्लस्टर बन जाएगा उसके लिए क्या होगी? यहाँ पे फिब्रोसिस हो जाएगी. ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज सर्फेक्टेंट म्यूटेशन. Surfactant mutations. Now, SP-A protein, SP-B protein, SP-C protein, SP-D protein, SFTP-A, SFTP-B gene, SFTP-C gene, SFTP-D gene. These are the genes, these are the protein, these are the proteins on the epithelial surface. Okay. First of all, understand the function of these proteins. The function of these proteins is that when there is an injury occur due to any reason, then these proteins accumulate and repair the epithelial cells. And when the mutation occurs in these genes which encode these proteins, then after the injury, when these proteins are not available, then the reparation not occur. Okay, तो जो जहाँ से जो इंजरी हुई है वो दोबारा ठीक नहीं होगी, epithelial cell दोबारा ठीक नहीं होगी अगर इन जीन्स में म्यूटेशन होगी तो. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्फेक्टिव म्यूटेशन. Clear this point? All of these protein functions in maintaining the structure of the epithelial layer. Okay, in maintaining the structure of epithelial layer. The function of all these surfactant proteins is that they maintain the structure of the epithelial layer. If the any injury occur to this site, then these proteins repair the site, and if mutation occur in these genes, then these proteins will not produce, and the cell can and the epithelial surface can't repair. Okay, so it will promote the fibrosis. Okay, now
Now this is the number one usual interstitial pneumonia. Number two is non-specific 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 interstitial pneumonia. What is the non-specific interstitial pneumonia? This is the same, but the patchy is more uniform. The patchy appearance is more uniform. Okay, patchy appearance is more uniform. Is more uniform. Now the number third is cryptogenic organizing pneumonia. जैसा कि नाम से ज़्यादा क्रिप्टोजेनिक, क्रिप्टोजेनिक का मतलब है अननाउन। किसी की जो एटियोलॉजी है वो अननाउन है, किसी भी अननाउन वजह से जो है एक ऑर्गेनाइज नमूनिया होगा, ठीक है। तो उस कितने में क्या होगा, फिब्रोसिस होगी, ठीक हो गया। दिस इज आल्सो अननाउन, अननाउन अननाउन एटियोलॉजी। अच्छा अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। यूजुअल इंटरस्टिशियल नमूनिया, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल नमूनिया है, तीनों ही नमूनिया, लेकिन डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस ये है, ये जो इंटरस्टिशियल नमूनिया है इसमें जो फिब्रोसिस होगी वो प्रोग्रेसिव होगी, मुसलसल मतलब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन इसमें निस्बतन कम होगी। और इसमें नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल नमूनिया में जो फिब्रोसिस है वो कम होगी, ठीक है, मिनिमम होगी। लेकिन इसमें या तो सीरीज होएगी नहीं, अगर होगी भी सही तो बहुत ही थोड़ी सी मामूली सी होगी, ठीक हो गया। यानी कि ये वाली कंडीशन है, ये सबसे सवेयर है, ये मॉडरेट है और ये लेस मॉडरेट है, ठीक है। सिंपल है, मतलब कह सकते हैं मॉडरेट, सवेयर, दूसरी कौन सी होती है, माइल्ड। हाँ, माइल्ड, मॉडरेट और सवेयर। ओके, सो हियर इज अ मोर फिब्रोसिस, progressive fibrosis, progressive fibrosis. Here is the less fibrosis, and here is the not or minimum fibrosis. Minimum fibrosis. Now number 4 is यार मुझे जल्दी बता दो जरा। देखो लाओ सर की हाल है, ठीक हो? हां यार ये तो सब प्लान में लगे थे। Now number 4 is collagen vascular disease. What is the collagen vascular disease? Those diseases like arthritis and other is systemic lupus erythematosus. Rheumatoid arthritis or systemic lupus erythematosus, these are the collagenous vascular diseases. In this case, the collagens and this is a disease of connective tissue, and the lungs interstitium is made up of connective tissue. Okay, basically connective tissue, but there will be the endothelial cells also present due to the presence of capillaries, because capillaries are made up of endothelial cells. Okay, so sometimes due to the collagen vascular disease, the fibrosis also occur towards the lungs and also cause the fibrosis. Okay, during which disease? During arthritis and systemic lupus erythematosus. Okay, during arthritis
इस्केमिक देखें यहाँ पे कंफ्यूजन होना आप लोगों ने, ठीक है। कोलेजन वास्कुलर डिजीज मीन ऐसी डिजीजेस जो कनेक्टिव टिश्यूज को ज्यादा डिस्ट्रॉय करती हैं। कौन कौन सी डिजीज है? देखो ना, जो आर्थराइटिस हमारे घुटनों की डिजीज है, ये घुटनों के कनेक्टिव टिश्यू को क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। जब हमारे आर्थराइटिस होगा तो अगर इतना सीवियर हो जाएगा कि वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा वो आर्थराइटिस, ठीक है। जैसी बात है वो फिर लंग्स तक भी फैल जाएगा, वो लंग्स की भी कनेक्टिव टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करेगा। जब लंग्स की कनेक्टिव टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेगा तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो गई है? फिब्रोसिस, ठीक है। these are the fibrosic disease। और नंबर 5 हमारे पास है न्यूमोकोनियोसिस। एक तो है नमूनिया, वो हम डिस्कस कर लिया है क्या, न्यूमोकोनियोसिस। सो व्हाट इज न्यूमोकोनियोसिस? डॉक्टर जोहेब, यू नो, आई थिंक। सो व्हाट इज न्यूमोकोनियोसिस? हाँ डॉक्टर किरजा, डू यू नो अबाउट न्यूमोकोनियोसिस? यू आर कंफ्यूज। कोई नहीं, खैर है, आ जाएगी, टेंशन ना लो। डॉक्टर ऐशा, आप न्यूमोकोनियोसिस देखें। निमोनिया होता है हमारे किसी भी फॉरेन पार्टिकल, खासतौर पे बैक्टीरिया और वायरस की वजह से या फंजाई की वजह से, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल की वजह से। और जो न्यूमोकोनियोसिस है इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल डस्ट, ठीक है। इसमें सिलिका हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, कोल डस्ट हो गया, ठीक है। तो मिनरल डस्ट जितने भी मिनरल डस्ट हैं, उसके नतीजे में जो इन्फ्लेमेशन होगी उसको क्या बोलेंगे? न्यूमोकोनियोसिस। Okay, so what is pneumoconiosis? Pneumoconiosis is the inflammation due to the dust particles. Inflammation due to the dust particles. Inflammation due to dust particles. So which type of dust particles? There are the following 3 main dust particles: silica, asbestos, and coal. Okay, coal, silica, and asbestos. Now the pathogenesis of pneumoconiosis is very interesting, is very gangster. Okay, Dr. Zaid, please look here. बोल्ड मैसेज नहीं आ रहे। व्हाट इज इट? अच्छा, इसकी जो पैथोजेनेसिस है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखें, जब डस्ट पार्टिकल्स हम इनहेल करेंगे, ठीक है, तो फर्क करें हम सिलिका या कोल या एस्बेस्टॉस कोई भी डस्ट पार्टिकल इनहेल कर रहे हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स जो है ना, सपोज I am working in a factory, okay, and you are sitting in a factory. In this case, there are the more chances that I will inhale the dust particles like silica, coal, or asbestos. If I inhale the coal particle or silica particle, then these particles entrap in the mucous membrane. These particles entrap in the, suppose this is a silica. This moves into the trachea and in the fungi it stuck. Okay, it is entrapped in the mucous membrane, in the mucous layer, and in the mucous layer when this particle is entrapped, then the mucous layer have ciliary cells, and ciliary cells, what do the ciliary cells? Repel. Okay, so these particles will be move out. That's why sometimes we cough, we sneeze, so that sometimes cough is good for our health. You know, sometimes cough is particularly the productive cough. The productive cough is good for our health because the productive cough remove all these mineral dust particles from our lungs into the environment. Okay, so these dust particles remove out, but sometimes these dust particles entrap in the bifurcation of the alveolar duct. These are the alveolar duct, and these
it will not bifurcate. Okay, and in this case these dust particles impacted. Okay, in this case there will be the obstruction for the movement of the air into the lungs. So what will be happen when there will be the this is the less obstruction. ये तो अभी ट्रेलर है, दिस इज द ट्रेलर, फिल्म तो पूरी बाकी है। कैसे? जब यहाँ पे 10 पार्टिकल अटैच होगा तो एक गैंगस्टर सेल है हमारी बॉडी का। कौन सा गैंगस्टर सेल है? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज याद आएगा भाई, फॉरेन पार्टिकल आ गया हमारी बॉडी के अंदर, इसको मैंने जाके इनगल्फ करना है। अब यहाँ से जो है ना मैक्रोफेज ट्रेवल करेगा, इंटरस्टिशियम से जो है ना मैक्रोफेज ट्रेवल करेगा। ये क्या करेगा? इसको जाके इनगल्फ करेगा। जब इसको जाके इनगल्फ करेगा उसके लिए ये क्या रिलीज करेगा? इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 8, ल्यूकोट्राइन बीटा 4। तो सारे सेल जो हैं ये इकट्ठे करना शुरू कर देगा। जब सारे सेल इकट्ठे शुरू करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? स्कार बन जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगी? इंजरी हो जाएगी। और उसके लिए जब उस इंजरी को जब हम ठीक करेंगे तो ठीक करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? कनेक्टिव टिश्यू को यूज करती है। वहां पे कनेक्टिव टिश्यू से फाइबर्स बनेंगे। फाइब्रोसिस मीन द कलेक्शन ऑफ फाइबर्स। देखें यहाँ पे इंजरी हो गई है, अब इंजरी को ठीक करने के लिए क्या आएंगे? फाइबर्स आएंगे। जब इंजरी ज्यादा होगी तो फाइबर्स ज्यादा आएंगे। जब फाइबर ज्यादा आएंगे तो क्या हो जाएगी? फाइब्रोसिस। और बहुत सारा मास बन जाएगा और उसके लिए हवा बाहर अंदर नहीं आएगी। बहुत सारी निमोनियोसिस